Hello, let's do question number 5 of exercise 10.2 in the new book and 10.4 in the old book of class 9 maths. It was three girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. See, I have already drawn the figure so that I can explain it side by side to you. See, Reshma passes the ball to Salma, Salma passes the ball to Mandeep. Now Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma and Mandeep to Reshma. So we have drawn lines over here. Now if the distance between Reshma and Salma and Mandeep is 6 meter each. Now the distance between these two is 6 meters. Okay. Then what is the distance between Reshma and Mandeep? So we want to find the distance between Reshma and Mandeep. That means we want to find out RM. So what will be the given? Given is RS is equal to SM is equal to 6 meter and the circle is of radius 5 meter. Alright, and to prove will be find RM. Okay, or to find will be RM. Now what we will do is we will start solving the question by taking this triangle ORS. See, now we want to find out the value of RM. Okay, so we want to calculate RM in such a way so that we'll get some value. Okay, so we will find the area of triangle ORS by Heron's formula so that we can get some answers. Here I have already solved it. See, in Heron's formula what do? We take three sides. A is 6, B is 5, C is 5, S, A plus B plus C by 2, and what is S? You remember, it is semi-perimeter. Okay, so it comes out to be 8, and if you find out area of triangle ORS by using Heron's formula, it will ultimately come out to be 12. यहाँ तक सॉल्व हो गया, ORS आ गया. Okay, अब देखो RSM, this is an isosceles triangle. Okay, so you will write triangle RSM is an isosceles triangle, and we know that in an isosceles triangle a line drawn from the vertex to the opposite chord bisects the chord at 90 degree. That means if you take this triangle RSM if you take this triangle RSM, it is an isosceles triangle, so a line drawn from the vertex to the opposite chord will bisect the chord at 90 degree. मतलब एंगल N क्या हो गया 90. अब इसका हमें फायदा क्या हुआ? एंगल N is 90, and what reason you will write? In isosceles triangle, a line drawn from the vertex to the opposite chord bisects the chord at 90 degree. Remember, you always have to write the reasons so that you get the full marks, ताकि marks ना कटें, पूरे number आए. Okay, so if it bisects the chord, then that means I can say that Rn is equal to Nm. I can say that Rn is equal to Nm. इसको हम आगे यूज करेंगे, सो आगे इसको दे देते हैं नंबर 1. ओके, नाउ एक तरीके से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS निकाल लिया. अब फिर से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS निकालूं बाय टेकिंग द फॉर्मूला हाफ इंटू बी इंटू एच, वेयर बेस इज OS and that height is Rn. ओके, हाफ इंटू OS मेरे पास था 5 क्योंकि वो रेडियस था. ओके, Rn मुझे पता ही नहीं है. ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया. अब ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, बट हाउ इज इट पॉसिबल? अगर ये दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS ही हैं तो ये दोनों तो सेम होने चाहिए. तो इसका मतलब हाफ इंटू 5 इंटू Rn शुड बी इक्वल टू 12 क्योंकि ये सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So Rn is equal to R into 12 over 5. Okay, so it is equal to 24 over 5. तो ये कितना आ गया? 4.8 meters. right, 4.8 meters.
अब फ्रॉम 1 हमने किया था कि आर एन इज इक्वल टू एन एम है, तो हमें पूरा निकालना है ना, तो इसका मतलब आई कैन से दैट आर एन इज हाफ ऑफ आर एम, आर एम का हाफ है, मतलब 2 टाइम्स आर एन इज इक्वल टू आर एम, दैट मीन्स आर एम इज इक्वल टू 2 into 4.8 विच इज इक्वल टू 9.6 मीटर आंसर. So this is a much easier way to calculate this sum, to find out this sum. This is an easier method. On internet you can find other methods also in which the same question is done in a very complex and a difficult way. If you want to see this video, then in few minutes I will solve the same question by another method. You can check out that method also, so that you can compare that which method is the easiest. So in this video you will find both the methods of solving question number this, but I would recommend that you solve the question by this method only. Okay, but for curiosity sake, if you want to say, go on, continue to watch the video. Okay, and don't forget to click on the subscribe button. Let us now look at the other way of how to do the same question. Now see, we will in that question we have found by the area of ORS by Heron's formula. Here, if Heron's formula does not come in our mind, then we will find the area of ORS by using half into B into H rule. Okay, this is given to be 6, this is also given to be 6, and these two are the radii, so they are 5 and 5. Here we will do a construction that we will draw OP parallel perpendicular to RS. Now OP, okay, is perpendicular to RS, and a perpendicular from the center to the chord of a circle bisects the chord. That means this is equal to this. So अगर ये पूरा 6 है तो ये 3 3 हो गया, right? And I can also say that RP is equal to half of RS. Same reason, अगर ये bisect कर रहा है तो ये RP पूरे का हाफ होगा, मतलब अगर ये पूरा 6 है तो ये 3 होगा, right? अब ये वाला ट्रायंगल ले लो OPR, it is a right angle triangle. सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास OP आ गया 4, OP हमारे पास ये वाला आ गया 4. ओके, नाउ अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS. क्या? हाफ इंटू बी, बेस इज दिस एंड एच इज दिस. सो हाफ इंटू बी इंटू एच, सो हाफ इंटू RS इंटू OP. लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया 12. ओके, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, राइट? इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, हमें यहाँ से पूरा सॉल्व करना पड़ता है. ओके, इन हेरोन्स फॉर्मूला दिस होल थिंग वी डोंट नीड टू फाइंड आउट. अगर हम हेरोन्स फॉर्मूला से करते हैं, बिकॉज आवर मेन मोटिव इज कि हमारे पास किसी तरीके से ट्रायंगल ORS आ जाए, सो दैट हम ये NR फाइंड कर लें और इसको डबल कर दें. बाकी का मेथड सेम है कि इन ट्रायंगल RS इज इक्वल टू SM, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया. और आइसोसेलेस ट्रायंगल पे अगर कोई भी ऑपोजिट कॉर्ड पे, ऑपोजिट लाइन पे ड्रॉ करें, ठीक है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल में होता है ये. ओके, ड्रॉ करें तो वो मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों होता है. तो अगर ये मीडियन है तो RN इज इक्वल टू NM. ओके, RN इज इक्वल टू NM, और ऑल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा. अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो फिर से अब मैं अगर इसी ORS ट्रायंगल में ये बेस लूँ और ये हाइट लूँ, तो आई कैन से हाफ इंटू OS इंटू RN. ओके, बट अगर ये दोनों एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इसके इक्वल होना चाहिए. तो सेम वे इसको इक्वेट करो, RN आ जाएगा 4.8 और RM क्या हो जाएगा 2RN. वैल्यू पुट कर दो, आंसर विल बी सेम. Okay, but according to me the first method is better method. You should follow that method. Okay, so bye. I hope you understood, and don't forget to click on the subscribe button. Bye bye.